thinking process होता है, the way we think, we program a computer to use uh, those justifications and processes. How do we do this? How do we achieve this type of intelligence in computers? When we think of a human mind, हम sensory input लेते हैं in the form of sound, sight, and many other things, and then all of that is processed in our brain, and then we create an output on the basis of that sensory input in the form of a behavior. When we think of an artificial intelligence, yes, all of these things have analogs. So in an artificial intelligence, the sensory input would be our data, our brain would be the model, and the behavior would be the output. The data can be anything. Data can mean images, text, or numbers, or sheets, depending on what we are trying to achieve. Another application of artificial intelligence is we very commonly use it for things like processing whether or not cells that we are observing are diseased. How can we do this? We use algorithms to determine whether a cell is diseased or not. This algorithm can take any number of variables into account: cell key shape, color, size, things like that. And then on the basis of those parameters, we classify cells as either diseased or healthy. Now, something you may have noticed in this slide is that one diseased cell has been classified with the healthy cells, and one healthy cell has been classified with the diseased cells. Well, इसकी वजह ये है कि no model is perfect, and just like that, no human is perfect. So sometimes what can happen is when we have certain overlaps in different parameters, certain things can be classified into the wrong categories. But this doesn't mean that this doesn't mean that we have a bad model. So there are five questions that we ask when we start building an AI, which are questions of the application that we're potentially building. The first question is which category. So if we're trying to categorize something, then we will use the method that is classification. And this is the method that we're going to be using in today's application. The second question is how much or how many, and this is prediction. Typically, we do prediction applications using regression. इसकी बहुत सारी applications होती हैं, but some off the top of my head are predicting the price of a house from its area, or predicting whether a stock will go up or go down in the future. Then we have anomalies. So anomaly detection इस तरह है कि if we want to detect something that doesn't belong in a group, then we will use this kind of model. What this does is it detects which uh, which element has parameters which differ from the rest of the group. We can use this to classify things. Again, we can also use this for things like disease cell classification. But there are a lot of other examples. For example, in this case, we're detecting the anomaly, which is a dog among cats. What's next is reinforcement learning. Typically, reinforcement learning is used for predicting, or rather calculating the next step to take in a game or a puzzle. And then the final question is structure or clustering.
Now, clustering का मतलब होता है कि we're putting similar pieces of data together into a group. So what that means is, let's say कि we have uh, 500 entries in a table, और हम पता लगाना चाहते हैं कि which of these are the most similar. So we can use data clustering, and we can group them together into individual groups that all share similarities on the basis of some number of parameters. Now, in this slide, I forgot to elaborate. We can use many different algorithms for the classification in this case. So algorithms can consider any number of parameters, such as any number of parameters, such as and again, just मैंने कहा था, size, color, or uh, size, color, or chemical composition even. And an algorithm will basically determine which factor plays how much of a role in our classification. Also, I will get to the questions at the end of this section of the presentation. So all of this is enabled by machine learning. Now, that begs the question, what is machine learning, and how is it different from artificial intelligence? So machine learning is basically a subset of, or a method of implementation of artificial intelligence. It isn't necessarily separate from artificial intelligence, but yeah, machine learning uses things like neural networks and deep learning. We also, you will typically see that when we're studying artificial intelligence and machine learning, we often use, or we often discuss applied artificial intelligence, which is when we make something, we will make something that is applicable and relevant. We basically want to use whatever we make in some application. So today we're going to be classifying using custom vision. And at this point, I'm going to go through the questions and answer any. The session is expected to last till 11, or maybe a little before 11. LinkedIn Premium license के लिए you have to stay throughout the session, and then there will be a quiz at the end, and the top performers in the quiz will be awarded with LinkedIn Premium licenses. The difference between clustering and classification is in clustering, the model will not know कि वो किस basis पे उनको cluster कर रहे हैं. Yeah, rather the model will know, but it won't necessarily know why all of those elements are being clustered together, rather than as opposed to classification, in which case the model will know what to and the model will know what a certain class entails, और उस चीज के बेसिस पे वो कहेगा, अच्छा ये जो एलिमेंट है ये मुझे लग रहा है कि इस क्लास में बिलोंग करता है. बट in the case of clustering, it will say कि ये सारी चीजें मिलती जुलती हैं, तो I'll put all of these in one group. Also, thank you, Sahil Ali, for your explanation of regression versus classification. In reinforcement learning, we typically have some sort of award mechanisms जिससे हम determine कर सकते हैं कि whether or not a AI is performing well. It's also sometimes referred to as feedback neural networks, but we'll get right now we're focusing more on classification. Okay, so moving forward, today we're going to be using custom vision, and we're going to be making a quick little model that will allow us to classify different breeds of dogs.
So custom vision is a service that is provided by Microsoft Azure, and we can use it to offload any processing from our computers to the cloud. And it makes it very easy for us to create classes and then classify uh, images into those classes. So creating custom vision models in Azure is basically divided into three steps. First, we're going to upload and label our images. Then we're going to train the model, and then we're going to evaluate the results. So now let's move on to creating the model. So the first step to creating the model is we are going to be uh, first of all, I'm going to share this GitHub repository and the link to everyone in the chat so that you can also follow along. Okay. So the first step is to make sure we have everything we need to start building the application. And we're going to start by duplicating or cloning a repository on GitHub. So we're going to start with this. Now, once we're at the repository, we're going to click this button, use this template, and I'm going to name it something that I can remember, but also this has to be something unique for my own GitHub account. So this can't be something this can't be a name that I've already used, of course. So I'm just going to call this workshop uh, library 2. Okay, workshop library 1 में पहले use कर सकता हूँ, 2 भी use कर सकता हूँ, so I'll just use 3. And it doesn't matter if public or private है, it can be anything, but मैं public रख रहा हूँ. And then we'll just create this repository. All right. अब हमारे पास ये रिपोजिटरी क्लोन हो गई है. So what we're going to do is हमें ये सारा जो material है, we need to have this locally on our computer. And there are a number of ways to do it. आप इसको download भी कर सकते हो, but I'm going to do this with the command line interface. तो उसके लिए you click the code button and then यहाँ से आप ये वाला link copy कर लोगे. So you just hit this button और वो copy हो जाएगा. Then we can open our command prompt और यहाँ पे हम करेंगे git clone and then the link. Now this is going to take a few, maybe a few minutes. Meanwhile, मैंने एक दो चीजें मिस करी थी. So what is ऐसा? So I'll explain थोड़ा सा और about how we're going to train the model. So model train करने के लिए what we need is a data set, and a data set will contain anything जो आपके specific application के लिए relevant है. For example, अगर मैं कोई prediction के लिए machine learning model बना रहा हूँ, तो it will contain maybe graphs, maybe sheets of numbers जिनको मैं predict कर रहा हूँ. But in this case, since हम dogs को classify कर रहे हैं, so we're going to need pictures of dogs ताकि हम उसको classes define कर सकें. So that's going to be our data set. Or a model is basically to an AI what a brain is to a human. जो model जो है उसमें जब हम data देंगे तो it will process that information और वो हमें एक result देगा at the end. Right. If you have any questions, feel free to ask them while this. Right. इसके दो तीन prerequisites हैं. You just need to have Git and Python installed on your computer, Python 3.8 or newer, and also Git.
Git यूज हम करेंगे इस काम के लिए. I should have explained this पहले. My apologies. And then we will be using Python later on in this example. Right. So while this loads, I guess मैं थोड़ा सा आपको आगे बता देता हूँ. Just right. So once we have our repository cloned, हम उस repository के लिए या इस application के लिए उसके बाद हम we will move on to using the Azure services. So it would be good अगर आप अभी अपना Azure for Students के लिए enroll कर लें using your university email address और उसके बाद आपको credits भी मिल जाएंगे to use the service. So if any of you are following along, so you can sign up right now. राइट यहाँ से आप ये जो लिंक है HTTPS के नीचे जो लिंक है इसको कॉपी कर लो और फिर आप आपके पास अगर git installed है तो open your command prompt and then type in git clone और clone के बाद वो लिंक जो आपने यहाँ से कॉपी किया था वो पेस्ट कर दो. If you don't have git installed तो आप यहाँ से इसको directly download करके download as a zip. Let me show you. जैसे यहाँ पे डाउनलोड जिप लिखा हुआ है यू कैन डाउनलोड दिस एंड देन वी कैन गो ऑन वहाँ से. यू डोंट नेसेसरली नीड टू यूज दैट मेथड. तो वंस यू डाउनलोड जिप उसके बाद आई गेस जब हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो मैं बता दूंगा व्हाट डिफरेंस इट विल बी फॉर एनीवन हु हैज डाउनलोडेड जिप करके और अदरवाइज अगर आपने CLI किया तो मैं वो भी बता दूंगा. Right, so this is taking a little longer than expected. But I guess we can move on while that downloads in the background. So now that we've cloned the repository, हम Azure for Students के लिए enroll आप कर लो. मैंने since enroll किया हुआ है तो I will go forward. But ये यहाँ पे जो link है इससे आप enroll कर सकते हो. तो सबसे पहले we're going to need two keys. We're going to need a training key and a prediction key. So to get these keys हम Azure portal पे जाएंगे. So this is the Azure portal. अब इधर से what we're going to do is we're going to create a resource. और फिर create a resource में आके आप यहाँ पे custom vision search करोगे. Once you search custom vision ये आ जाएगा यहाँ पे and then you click it and then you click create. अब यहाँ से since we need both keys हम यहाँ पे both select करेंगे. Our subscription will be Azure for Students और resource group होगा custom vision. यहाँ पे आपको create new करना पड़ सकता है but अगर आपको create new करना पड़े तो just name it custom vision और आप फिर वो use कर लो. Now यहाँ पे region आपने select करना है whatever is closest to you. So since मैं पाकिस्तान में हूँ I will be selecting Southeast Asia या India maybe. Where's India? Central India since these two are the closest to me. But आप जहाँ भी हैं आपके closest जो भी होगा वो आप select करेंगे. And then I will write the name. यहाँ पे जो नाम मैं लिखूंगा वो नाम बाद में I will be this will be coming back. So let's call this something जो हमें याद आराम से याद है. So I'm going to call it custom vision some. Oh, I've already done this, so I'll just call it something one. Okay. And then जो pricing tier है यहाँ पे आपने F0 select करना है.
But since I've already created the model, sorry, the service, तो मेरे पास अभी available नहीं हो रहा. Right. So after doing this, आप यहाँ से review plus create को click करोगे, but since मेरी information missing है या नहीं होगा, and then you will create it, and then we will be done with this page. Now, हम next step पे चलते हैं. So the next step is to train the model. एक second, let me just look at the questions real quick. Right, thank you Sahil Ali for answering the question. Right, so the next step is to train our model. और model हम train करेंगे using जो custom vision वाली website है. So we're going to go onto the custom vision web page, and यहाँ पे आप अपने university के email से sign up और sign in करोगे. ठीक है, and after signing in, what you will do is you will create a new project. अब project बनाते हुए I'm just going to call this dog classification, लेकिन in the future whenever you're doing this, आप जो भी classification का application बना रहे हो, whatever it is, आप वो नाम रख सकते हो. And then resource में this is uh, a key that I create key नहीं, this is a resource that I created previously, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जो Azure portal से हमने बनाई थी. So this is where it's going to automatically show up once you've logged in with the same account. So I'm just going to use the one that I used previously, but आप लोग जो भी अपने नाम के साथ बनाएंगे वो यहाँ पे show up हो जाएगी as long as you're using the same account. Then project type में we're going to select classification. Classification type में we're going to select multi-class. And then domain में we're going to select general, and then we are going to create the project. अब now we've created a project, हमें जो three steps that we talked about, upload, train, and then जो verification का था, तो evaluation, those three steps वो हम वापस आएंगे. So the first thing I'm going to do is I'm going to add images. Now let me see if the repository, is the first game. Let's see if I can do this again. I'm going to stop sharing for a few minutes, and then I will resume. Let me just check one thing on my computer. Right. So I can stop this since I already have an instance of the repository clone. But obviously, you will wait for all of this to complete, and then जब वो complete हो जाएगा, then you will move on to the next step.
So once हमारी repository clone हो जाए, it's going to show up in your users वाला folder, and it's going to show up as जो भी आपने इसका नाम रखा था in your account, and then it's going to show up like this. So we're going to leave this for now, and we're going to go back to the to the custom vision wala page, and we're going to add images. अब यहाँ से you have to navigate to the folder जो repository आपने clone की थी, तो we will go down here, workshop library, और यहाँ पे ये full एक folder होगा, and then inside here we will have ML model custom vision. अब now that we are here, you will notice कि यहाँ पे दो images के folders हैं, testing images and training images. ट्रेनिंग इमेजेस और टेस्टिंग इमेजेस को हम अलग रखते हैं ताकि वी हैव वी कैन रियलिस्टिकली हम डिटरमिन कर सकें कि हमारा मॉडल जो है सही तरह परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा. बिकॉज अगर हम अपनी ट्रेनिंग इमेजेस में से ही उसको टेस्ट करेंगे, यानी जिन इमेजेस से हमने उसको ट्रेन किया है वही इमेजेस हम यूज करके उसको टेस्ट करेंगे, तो what will happen is वो हमेशा सही आंसर देगा, but we won't truly know कि वो सही तरह क्लासिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा. So we have different sets of images for training and testing. So in our training images, you will notice that we have a few different types of dogs, and हमारे पास उनकी named files हैं. So all of these are named American Staffordshire Terrier, and then we have 8 of this dog, and then we have 8 of this other dog. So इस तरह ये group हुई थी already. So we're going to take the first type of dog और हम इसकी सारी pictures select कर लेंगे, and we're going to upload them. And now what happens is जब वो तस्वीरें upload हो गई हैं, so we're going to give it a name, and I'm going to call it the American Staffordshire Terrier. I apologize अगर मैं कोई spelling mistakes कर दूं यहाँ पे. Spelling is not clear. Okay, so now that we've told this model कि ये हमारे पास American Staffordshire Terrier है, and this is what it looks like, हमने उसको 8 तस्वीरें दे दी हैं. जब हम इसको ट्रेन करेंगे, so it will learn that. So we're going to repeat this process for all of the different dogs. So next हमारे पास Australian Shepherd है, so we're going to select all of these, upload, and then we're going to repeat this process with all of this. And what we're doing in this step is basically हम images को label कर रहे हैं. We're telling the program के ये सारे जो हैं ये American Staffordshire Terrier हैं, ये सारे जो हैं वो Australian Shepherd हैं. And we're going to keep doing this until we've uploaded all of our images. German Wired, क्या था इसका नाम? German Wired Pointers. And then finally we have this Shorky. इसकी 13 तस्वीरें हैं हमारे पास. So we're going to call it Shorky. अब now that we have all of these pictures uploaded and हमने इन सारों को label भी कर लिया है, we've told the program कि अच्छा ये सारे dogs हैं, this is what they look like. अब हम इसको train करेंगे. Now जब हम तस्वीरों को train करेंगे, what that will do is it will tell our model के, या rather हमारा model जो है वो ये सीख लेगा कि जब ये label है तो उसके अंदर किस किस्म की तस्वीरें हो सकती हैं. So it will take all of these pictures, उनको process करेगा, और at the end it will क्या कहते हैं, we will have a model that will be able to determine कि किस type का dog हम दूसरे दिखा रहे हैं. Right. तो अब हम इसको finally train करेंगे. तो train करने के लिए we're just going to hit this button, और यहाँ पे quick training automatically select हुआ होगा by default. So we're going to train. अब इस part में थोड़ा सा time लगेगा, so we're going to go back to our presentation.
एंड अगेन अगर किसी का कोई सवाल है तो ओके, isn't our data set too small? In theory, yes, हमारा data set small है, and I will explain in a bit कि इससे क्या क्या issues आ सकते हैं. But this is enough कि हम we can get a good understanding of how things are working. If we have a case of overfitting or underfitting, how are we going to tackle that issue? ओवरफिटिंग टिपिकली तब होती है जब हम अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए अपने मॉडल को इस लेवल तक ट्रेन कर देते हैं कि वो हमारे ट्रेनिंग डाटा या टेस्टिंग डाटा पे तो 100% एक्यूरेट हो जाता है. बट व्हाट हैपेंस इज जब हम उसको रियल डेटा फीड करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है. एंड अगर अंडरफिटिंग इज द ऑपोजिट, तो वी हैव अ मॉडल जो ट्रेनिंग डेटा पे एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा, एंड इट डजंट नेसेसरली ट्रांसलेट कि अगर यहाँ पे कम एक्यूरेसी है तो वहाँ पे ज़्यादा होगी. तो इसका जो हल होता है वो ये होता है कि वी ट्रेन आवर मॉडल्स विद वेरी वेरिंग डेटा, एंड हम उसको वी रियली डोंट वांट, yeah, it's very hard to have a model that will be 100% accurate, and we don't want that anyways. हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए होता है जो मोस्टली एक्यूरेट हो, क्योंकि कोई भी ह्यूमन भी इस तरह 100% रिलायबल नहीं होता. समटाइम्स देयर विल बी अ डॉग दैट इज थोड़ा एम्बिग्यूअस कि किस ब्रीड का है, हमें नहीं समझ आएगी जस्ट फ्रॉम लुकिंग एट इट. एंड द सेम इज ट्रू फॉर आवर मॉडल्स. तो प्रोबेबिलिटी एंड एआई, जैसे कि मैंने कहा, नो मॉडल इज परफेक्ट, एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो हमारा जो मॉडल है इन दिस केस, वी फेड इट pictures of 5 different kinds of dogs, और उसको उन डॉग्स के अलावा कुछ भी नहीं पता. दिस इज व्हाट अ क्लोज यूनिवर्स इज. तो इफ आई ट्राई टू आस्क इट कि यू नो अगर मैं उसको एक गाय की तस्वीर दूँ, मैं कहूँ कि ये क्या है, तो इट विल थिंक कि ये किसी किस्म का डॉग है, और वो उसको उन 5 क्लासेस में से किसी एक में क्लासिफाई करने की कोशिश करेगा, एंड वो करके ही छोड़ेगा. इट्स नॉट गोइंग टू से कि दिस इजंट a dog, or this is a cow. It won't know that. So this is what a closed universe is. It will always try to match the image to what it knows. And when you think about it, this is also true for humans. हमें जो पता होता है, हम उसी के basis पे अपनी judgment कर सकते हैं. We can't make a judgment based on something we don't know. Right. And then again, there is always some level of uncertainty. All models will make some mistakes, and 100% model जो है वो almost impossible होता है. 100% accurate model, and by impossible I mean 100% accurate model जो real data पे 100% accurate है. So improving accuracy. Now how can we improve accuracy? इस केस में, since we're training a model on pictures of dogs, one may think कि अगर मैं उसको एक dog दिखा रहा हूँ तो it would know what that dog looks like, but really it knows what a picture of that dog looks like. तो अगर मेरे पास कोई ऐसा डॉग है जिसकी सारी पिक्चर्स मेरे पास घास पे है, तो इट विल सॉर्ट ऑफ रिमेम्बर कि घास वाली तस्वीर जो है ना, ये इस डॉग की है, एंड दैट्स अ स्मॉल प्रॉब्लम हमारे लिए. So when in that case, if I give it a picture of a cat on grass, so it will again think कि वही वाला कुत्ता है जो घास पे बैठा हुआ था. And there is a way to solve this, and that is कि rather than using pictures all in the same setting from the same angle, हम ऐसी pictures use करेंगे that cover a wide range of settings. Dog जो है वो हमारा सड़क पे भी होगा, घास पे भी होगा, ठीक है, हमारा फर्क फर्क साइड से अंधेरे में, धूप में, इस तरह की फर्क फर्क सेटिंग्स हम यूज करेंगे, so that we have a good variety of information for the model to process. Okay, so I think by now हमारा model train हो चुका है, and as you can see, it's ready to go. Um, right. So now that we have our trained model, हम इसको use करेंगे, and we're going to use it by making a little Python program जो इसको कॉल कर लेगा.
बाकी सर्विसेज को यूज कर लेगा. So the first thing we're going to need to do is इसको हम publish करेंगे. And publish करने से ये होगा कि ये जो model है हमारा, this is going to go onto the cloud and this is going to be available to use. So we're just going to एक second. Right. So model name में हम we can put whatever we want. यहाँ पे in this case हम dogs को predict करें, so we're just going to call it prediction. Yeah, dog prediction. Let's just call it dog prediction. And then we are going to prediction resource में we are going to select जो कि हमने पहले create की थी. So this is the one that we created. Again ये फिर से recurring theme है जो हम यहाँ पे create किया था हमने, वो यहाँ पे हम use करें. And we're going to publish it. So now that this is published, we're going to take a few pieces of information यहाँ से that we're going to use in our program. So first हम जाएंगे prediction URL में, and यहाँ से हमें चाहिए ये image URL, the one on the top. इसको for now I would suggest कि आप एक notepad खोल के उसमें copy कर लें. And we are also going to need this prediction key. And this is all that we need right now. यहाँ से. Now अब हम जाएंगे settings में, and then settings से we need this project ID. So project ID भी हम यहाँ पे save करेंगे. And all of this is going to be used very soon. Right. Okay. So now that we have all of these keys, हम इसको use करेंगे to make the Python app. Now, अच्छा, तो you can either go into the folder जहाँ पे आपका ये आपकी library load हुई हुई है, library के अंदर specifically full में जाके ML model custom vision यहाँ जाके आप अपना खोल सकते हो Visual Studio, या you can just in your command prompt आप navigate करके, so you can just go to the library जहाँ पे आपने जाना है. So we'll just cd workshop library, and then we go to full, and then ML model custom vision. And अब हम उस फोल्डर में आ गए हैं जहाँ पे हमारा ये फाइल्स हमने रिपोजिटरी से डाउनलोड की थी. स्पेसिफिकली इस वक्त हम ये यूज कर रहे हैं, इसी में हमारी ट्रेनिंग और टेस्टिंग इमेजेस भी हैं. So what we're going to do now is हम यहाँ पे code space dot लिखेंगे और इससे हमारा इस रिपोजिटरी के अंदर हमारा Visual Studio कोड खुल जाएगा. And तो यहाँ पे you're going to see के जो files हमारी इस repository की थी वो यहाँ पे they are going to show up, and we're going to create a few files यहाँ से that हम use करेंगे for our program. तो सबसे पहले we're going to create a .env file. तो .env फाइल हम क्रिएट करेंगे, यहाँ से फाइल क्लिक करेंगे और .env बना देंगे, बट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ. .env फाइल में हम अपनी ये अपने कीज डालेंगे. तो ऑल ऑफ दिस इज हाउ आवर कोड इज गोइंग टू क्या कहते हैं कम्युनिकेट विद आवर मॉडल जो उस पे हमारा एजर पे होस्ट हुआ हुआ है. तो एंड पॉइंट में हम डालेंगे ये लिंक. नाउ व्हाट इज वेयर डज दिस लिंक कम फ्रॉम? तो हमने जो लिंक थोड़ी देर पहले कॉपी किया था, दिस वन, इसमें यू विल नोटिस कि azure.com के बाद एक एक्स्ट्रा piece of text है. We're not going to use that text, तो हम इसको we're just going to separate this, और हमें सिर्फ ये टॉप वाला चाहिए. So we're going to take that and we're going to say endpoint equals to और फिर वो वाला sign. And then
की, और की में हम डालेंगे अपनी जो की हमने जनरेट की थी, एंड देन प्रोजेक्ट आईडी में हम अपनी प्रोजेक्ट आईडी डाल देंगे, एंड देन पब्लिश इटरेशन नेम कैन बी एनीथिंग. ठीक है. So once we have that done, we're going to create another file, and we're going to call it requirements.txt. And again, मैंने ये भी कर लिया है. But requirement.txt में you are going to write this, and this is also on the resource web page. If you go here, right? So resource web page पे you will see कि ये सारी चीजें बताई हुई हैं, and you will see this template. और इस template में हमने अपना endpoint डाल दिया, अपनी prediction key डाल दी, अपना प्रोजेक्ट आईडी डाल दी और नाम रख दिया जो भी, it doesn't matter किसका नाम क्या है. And then we will take this piece of code, python.env, and Azure Cognitive Services Vision Custom Vision. What this does is it sets up a virtual environment हमारे लिए that we can use to run our program. Right. तो हमने ये भी बना लिया. What's next? अब हम अपना टर्मिनल खोलेंगे, and in our terminal we're going to write a few lines of commands. ये हमारे पास commands है. So first of all, we're going to write Python 3 -m vnv. What this does is this creates the Python 3 virtual environment, and then we're going to activate it using this script. And then जो requirements.txt में requirements हमने डाली थी उनको हम install कर देंगे. So you can just copy all of this, and you can paste this यहाँ पे. अच्छा, तो ये एक एक हो रही है, but हाँ सही है. ओके, तो हाँ सही है. इट जस्ट डिड एवरीथिंग खुद से. सही है. तो नहीं, वेट एक सेकंड. ओह राइट, सॉरी. मैंने आई मेड अ मिस्टेक. ये हमने कमांड टर्मिनल में नहीं करना, हमने ये पाइथन के टर्मिनल में करना. तो वी आर गोइंग टू गो टू, हम अपना ये खोलेंगे. First, we're going to save everything जो हमने अभी तक किया है. तो we're going to save, and then we're going to terminal, फिर new terminal, and now we have a Python का terminal यहाँ पे. और यहाँ पे we're going to paste our commands. Right. अब ये virtual environment हमारी बन गई है. Then we will go here. You can copy all of these at the same time, but एक एक करेंगे. अच्छा, अब this command, this error is right. ये जो error है इसका हल ये है कि आप अपना PowerShell खोलोगे as administrator. Sorry, as administrator. And उसमें हम I made a misclick कर दिया. Right. PowerShell को हम as an administrator run करेंगे, and we're going to run a command, और वो command है एक second, let me just find this command. Right. ये रहा.
तो वी नीड टू सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी टू रिमोट साइंस. अब ये हम PowerShell में कमांड टाइप करेंगे एंड इसको हम just going to set execution policy remote. Uh, right. फिलहाल I don't know why I'm getting this error. ये पहले तो नहीं आया था, but I guess फिलहाल हम इससे आगे चल सकते हैं and hopefully आप लोगों के पास ये error नहीं आएगा. I've done this before, पहले तो नहीं आया था, but चलो it is what it is. खैर, तो ये 3 कमांड्स रन करने के बाद what we're going to do is हम अपना मेन कोड बनाएंगे and we're going to create this predict.py. और predict.py वाले के अंदर हम ये कुछ लाइंस ऑफ कोड डालेंगे. तो सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे. तो यहाँ पे फ्रॉम Azure Cognitive Services Vision Custom Vision Predict, this is going to load our prediction client, यानी जो this is going to basically load the library जिसको यूज करके हम predictions करेंगे. Then this is going to load the key class, which means हमारा जो मॉडल है वो rather जो keys हम यूज कर रहे हैं वो लोड हो जाएंगी. And then .env and then import OS. So we're going to copy all of this into our code. सबसे top पे ये डाल दिया है, ठीक है. And then we're going to load the variables. और इसके लिए हम ये वाला कोड कॉपी कर लेंगे. तो we, as you can see, यहाँ पे मैंने एक कोड ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, but आप ये कोड यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे. It's all right there in the workshop page. और फिर फाइनली हम ये कोड कॉपी करेंगे. दिस इज द कोड जो एक्चुअली हमारी प्रिडिक्शन वाले उसको रन करेगा. तो आई कैन क्लोज दिस. यहाँ पे यू विल सी सेटअप क्रेडेंशियल्स फॉर क्लाइंट. इसमें वी गोइंग टू यूज द प्रिडिक्शन की जो हमने सेव की है इन आवर फाइल्स. यहाँ पे थी हमारी वो ENV वाली फाइल, राइट. इसमें हमने जो चीजें यूज की थी वी आर गोइंग टू यूज देम अगेन यहाँ पे. So we're going to just tell it के prediction key है because it already knows the prediction key क्या है because of the env file. And then we're going to create a client and we're going to अच्छा अब यहाँ पे we're going to open a test file. अब यहाँ पे हम कोई भी फाइल डाल सकते हैं from the testing images वाला folder which we have यहाँ पे, right. So testing images में if you go in then you will notice कि हमारे पास more or less एक दो तस्वीरें हर किस्म के डॉग की हैं. So we can select any one of these. यहाँ पे already American Shepherd Terrier हुआ है, but we can replace this. हम इसको copy कर लेते हैं. So we're just going to um, copy as path, and then we can paste that here. So right. And हम कोई भी image इसके लिए use कर सकते हैं, but what this is going to do is हम ये तस्वीर अब अपने उसको code को pass करेंगे, and we're going to make predictions. And then we're going to store those in the results. And then finally हम for loop use करेंगे. And
I will now describe कि हम ये क्यों करेंगे. So if we go back to our model on the custom vision website, ये train हो चुका है. So we can test this really quickly. तो हम test में जाएंगे and we're going to upload an image हमारे testing images के folder से. So we're going to take any one of these. Let's take this one. And once it loads the image, वो फौरन आपको बता देगा कि it's 55% sure कि ये American Australian Shepherd है. And then it gives you a percentage for every type of dog कि कितना confidence है इसको कि what dogs. And we're going to replicate this output अपने model में भी. Right. So now that we have this, अब यहाँ पे you will notice for predictions in results dot predictions. अब यहाँ पे we're running a for loop ताकि हम सारे print कर दें, right? So अब हम इसको save कर लेते हैं and यहाँ पे हम बस predict dot py run करेंगे and it's going to give us Python predict dot py. Sorry, we're going to run Python predict dot py and it's going to run the code. Looks like we have an error. Right. Alright, let's just use the image हम पहले use कर रहे थे. Let's just run it like this. Hmm. Okay, so I don't know why मेरे पास errors आ रहे हैं. I did this previously और नहीं आए थे. But basically यहाँ पे आपको output में it's going to show you the same thing जो हमने यहाँ पे देखा था, which is कि it's going to tell you कि uh, it's 60% sure, yeah, 70 or 80% sure, yeah, in this case 99% sure कि this is a short key, right? Or this is this is how our classification wala algorithm works. Is it tells us it gives us a certain uh, prediction. It gives us certain prediction ke probability ke this is how confident it is uh, in our prediction, right? And if we go back to the right, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा. So now that we've completed this, we're going to move on to the quiz. And it's a very simple quiz जो हम shouldn't show that. मैं the screen share बंद कर रहा हूँ. And then I will share a code and a link और आप उस link पे जाके अपना quiz attempt करेंगे and then you will find and then you can leave. उसके बाद हमारा session end हो जाएगा. So give me 1 second and I will share the link with everyone. राइट. तो आप सब अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको ये Kahoot का लिंक नजर आएगा www.kahoot.it and I will send this to the chat as well ताकि आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर लें. एंड यहाँ पे आपको ये कोड नजर आ रहा होगा एंड आप इस कोड को यूज करके क्विज ज्वाइन कर सकते हैं. I mean, I guess आप लिंक डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. तो everyone can join up and then we will start the quiz. Uh,
अगर आपको मतलब लिंक नहीं मिल रहा तो आप ये जो क्यूआर कोड है ना इसको स्कैन कर लें। काइंडली अपना रियल नेम यूज कर, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन विनर है। एंड अनदर थिंग कि हमारे पास जितने लिंक्डइन प्रीमियम्स अवेलेबल होंगे उतने ही जो टॉप विनर्स होंगे हम उन्हें वो लिंक्डइन प्रीमियम्स देंगे, प्लस सबको ई सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें ताकि हम स्टार्ट कर लें अपना क्विज। जब तक आप लोग ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। दिस इज़ आफ्ताब अहमद। आई एम करंटली इन माय फाइनल ईयर ऑफ BScs. I'm from Sakhar IB University and leading MLSA club there. So I was a presenter also here, but मेरा जो थोड़ा नॉइस का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं बात नहीं कर पाया शुरू में। We're going to wait 11:08 के end तक, तो जितने लोगों ने ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे, then we'll start. I think we should start, Shams. सही है. Okay, तो okay, right. So now we're going to start. I'll leave it unlocked ताकि अगर कोई बाद में ज्वाइन करे तो वो भी आ जाए, but we're going to start the quiz. So the question is, a dataset always contains labels? And the correct answer was false. Right, next question. Next. So the Abdullah is on top. Using prediction, we can't forecast the weather, separate disease cell from healthy cells, approximate the cost of house from its area, or all of the above. Okay, pretty fast. Hmm. Okay, so let's see who was the quickest in this अगर round. आपको आंसर या मीन्स शो नहीं हो रहे तो आप फिर से ज्वाइन कर लें काइंडली। या फिर अगर Still आपको Abdullah is on the top. फिर भी सही आंसर He's शो नहीं हुए giving तो one आप and a half a स्क्रीन पे
ऑप्शंस and the देखें, then you quiz can match is the shapes अगर वो issue 2021 आपका consistent होता है. 605. काइंडली अपना रियल नेम यूज किया करें. ओके, Right. So top पे Abdullah जा रहा नेक्स्ट है, and क्विज. then Salman, and then Rafe. So let's move on to the next question. Okay, separating samples into different categories is called segregation, classification, separation, or splitting. आपके पास बहुत अच्छा सा हिंट है अगर आप ये सारे questions ऐसे हैं कि if you were paying attention during the first half of the session, तो आपको सारों के answers बड़ी जल्दी आ जाने चाहिए. Right. I hope everyone got this question right. So almost everyone got this question right. That's good. बट ये लोग कौन है जिन्होंने रॉन्ग आंसर दिए. So let's move on to the next question. True or false? A good model is 100% accurate. True or false? गेम पिन बॉटम पे मेंशन है, अगर आप चेक कर लें. kahoot.it गेम पिन. यहाँ किसी का जवाब गलत नहीं होना चाहिए काइंडली. अगर यहाँ पे भी किसी ने जवाब गलत दिया तो फिर अच्छा नहीं होगा. Mostly correct, which is I guess that's a good sign. चलें, moving on to the next question, and looks like Abdullah will be lead me here. Abdullah, very good. So next question, and we're halfway through the quiz now. Okay, so चलो, fairly good performance अभी तक. Let's keep going. Let's see. Abdullah is still ahead, and he is. Okay, next question.
Okay, almost everyone got this right as well. शुक्र है कोई बहुत बड़ी discrepancy नहीं आ रही. I think it's okay if some people get it wrong. Then they can. Most of you are getting it right, so that's a good thing. And oh, looks like Abdullah is not in the lead anymore. दो लोगों ने उसको overtake कर लिया. Okay, so now we're moving on to the next question. थोड़े से सवाल अब रह गए हैं. This is seventh question. Two more questions to go. Okay, looks like इस दफा थोड़ी discrepancy थी. I think इससे थोड़ा सा explain कर देता हूँ. If you remember the closed universe वाला example जिसकी बात की थी. So anything that the model hasn't been trained about, वो उसको अपनी knowledge में ही fit करने की कोशिश करेगा. If it's been trained on dogs, it will think everything is some kind of dog. So let's move forward. Looks like हर दफा बहुत सारे नए लोग ऊपर आ रहे हैं. That's good. Very interesting. अच्छा. Wow, very big upset. Okay, तो हमारे अब last दो questions आ गए हैं. तो and after that we're going to be done. Right. So I think आप लोगों में से कुछ लोग शायद भूल गए हैं, but हमने अपना मॉडल we trained it using the custom vision वाला जो पोर्टल था उस पे हमने train किया था, and it was trained on using Microsoft services. And this is why it was very important कि हम वो Azure portal पे account create करके एक resource create करते हैं. So this was so that we could use जो Azure के
cloud computing resources, and then we could offload all of the processing tasks to the cloud. एंड अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो उसके बाद you guys can, उसके बाद I'll sign off and then you guys can leave, और इंशाल्लाह you will all get your certificates, and जो भी top performers होंगे उनको LinkedIn premium accounts मिलेंगे. I made the last question a little easier ताकि सब कर लें. So I hope all of you get this right. LinkedIn premium accounts, जो भी number हमारे पास होगा, हम we're going to start giving them from the top. We're not, sure कि अभी हमारे कितने accounts दिए जाएंगे, but जो भी top performers होंगे उन सबको मिल जाएंगे इंशाल्लाह. Right. So the quiz is done, and that concludes our session, and that is all we had. अब इसके बाद, अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ right. ऐड करना चाहूँगा. नंबर ऑफ लिंक्डइन प्रीमियम्स जो है वो एमएलएसी की तरफ से होते हैं. जितने वो अप्रूव करेंगे उतने ही हमें मिलेंगे. वो भी सर्टन नहीं है कि हमें बस कितने प्रीमियम्स हमें मिलेंगे सेशन के लिए बेस्ड ऑन अटेंडेंस. सो जितने भी हुए ये जो टॉप क्विज में हैं उनको ईमेल कर दी जाएंगे, उनके जो लिंक्डइन प्रीमियम्स वाउचर के लिंक होंगे. Right. So I think that concludes our session. Or Shams, if can you you have any more open questions, the MLSA website? right. Give me 1 second. ओके, जस्ट लीव इट. कोई बात नहीं. तो अगर कैसे आप है? MLSA में आना नो नो मैं MLSA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं उसकी बात कर रहा था. फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट टू थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं किसी यूनिवर्सिटी में, और अगर आप MLSA को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सिंपली आप गूगल पे जाएं. ये आपको शम्स पेज शो कर रहे हैं. इस पेज पे आप जाकर एज अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट टू थर्ड ईयर MLSA के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो आप MLSA की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज अ स्टूडेंट. आपके लिए लर्निंग है. आप वर्कशॉप्स करवा सकते हैं, इवेंट्स करवा सकते हैं. उसके अलावा आपको कुछ सर्टिफिकेशंस दी जाती हैं, वो भी आप हासिल कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर 3 लेवल होते हैं मोस्टली. फर्स्ट, जब आप MLSA कम्युनिटी में आते हैं तो आपके पास न्यू MLSA का टाइटल होता है. देन आप जब कोई लर्निंग पाथ कंप्लीट कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट लर्न पर, तो आप अल्फ़ा MLSA बन जाते हैं. ठीक है. देन जब आप कोई इवेंट करवाते हैं, जैसे कि अभी शम्स एक इवेंट करवा रहे हैं, वो अल्फ़ा हैं. जब वो इवेंट करवा लेंगे, ये कंप्लीट कर लेंगे, तो वो बीटा MLSA हो जाएंगे, जो कि मैं पहले से हूँ बीटा MLSA. ठीक है. देन उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेज ऑफ MLSA आता है वो है गोल्ड MLSA. पाकिस्तान में बहुत कम बहुत मिनिमल लोग जो हैं वो गोल्ड MLSA हैं. ठीक है. गोल्ड MLSA आपकी थ्रू आउट जो आपकी जर्नी रही है MLSA के साथ, उसमें आपने जो भी कंट्रीब्यूशंस की हैं उनको कंसिडर करके आपको गोल्ड MLSA बनाया जाता है. So it's best opportunity if you are a student right now. Do apply for it और MLSC community को join कर लें. Thank you so much for joining us. Right. Thank you everyone for joining, and I hope you had a good time. आपने कुछ सीखा होगा, और I hope आप सबको, जो लोग Microsoft एम्बेसडर्स हैं, I hope आप लोग आगे कामयाबी हासिल करें, और जो लोग अभी नहीं हैं, I hope आप सब अप्लाई करें, और ज़रूर इंशाल्लाह आप एम्बेसडर्स बन जाएंगे.
So that being said, um, that is the end of the session. Thank you all for coming, and inshallah very soon आप सबको मैं आपके certificates email कर दूंगा, and जो भी quiz के top performance थे उन सबको उनका LinkedIn premium account भी भेज दूंगा. So thank you all for coming. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़.